Welcome back to the prediction video by Dr. Headhunters for the 700 examination of IELTS for both academic and TT candidates. Without wasting your time, let's get started. Now the prediction for the writing module. So we are starting with the academic task 1 first. The task 1 for academic would be a bar graph or any comparative graph. Academic, you need to focus very much clearly. जब भी आपको ग्राफ का एड्रेस कर रहे होते हैं, so you need to focus on two major things. First is analyze the information and second is structure your response. By analyzing, I mean जहाँ पे आपके ग्राफ में मेन ट्रेंड्स है, फॉर एग्जाम्पल ड्रामेटिक इंक्रीज है कि ड्रास्टिक इंक्रीज है, प्लीज उस चीज को आपने जरूर मेंशन करना है. जनरल एकेडमिक्स क्या करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड आप सब कुछ मेंशन करते हैं. इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, zigzag हुआ, क्वेश्चन क्या था नोटिस में, नाउ हमने सब मेंशन किया, हमारे डांस में नहीं आया. बच्चे द रीजन इज आप मेंशन कर रहे हैं एवरी अदर ट्रेंड इन डिटेल व्हिच इज नॉट एट ऑल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. You just need to focus on the dramatic and drastic. In simple language, जो चीज ग्राफ में पहली बार हुई है, कोई ऐसा ट्रेंड जो ग्राफ में पहली बार हुआ है, आपने बस उसको रिपोर्ट करना है, राइट. सेकेंड है स्ट्रक्चरिंग योर रिस्पॉन्स. स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने मेन मेन की फीचर्स यूज करके उनको रिपोर्ट करना है, इस तरह नेम्स आपने यूज करने हैं. कोई ऐसा वर्ड है जिसका यूसेज आपको क्लियर नहीं है, आई वुड से स्किप द वर्ड. अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट स्किप द वर्ड. प्लीज डोंट टेक रिस्क व्हेन इट कम्स टू योर टास्क वन. द टास्क वन आपका बहुत स्कोरिंग होता है, राइट. एंड सेकंड थिंग, प्लीज फोकस ऑन द वर्ड लिमिट. डू नॉट एक्सीड वर्ड लिमिट बियॉन्ड 180. अगर आप ज़्यादा लिखेंगे क्लियरली मीन्स कि आप एक डिफाइंड वर्ड लिमिट में अपने पास से नहीं कर पा रहे, जिस अगेन रॉन्ग, अगेन आपके बेनिफिट करेंगे. The task one for GT would be a formal letter. Again, GT candidates, अगर आप formal letter attempt कर रहे हैं, so you need to be very much careful of the selection of the words. For example, you need to write an appropriate greeting. Greeting means the opening of the letter. Dear sir or madam, something like that. Next thing that you need to focus on is appealing opening statement. जो आपकी appealing statement होगी, आपके letter की जो opening होगी, it has to be appealing, right? Next is please address each and every point of the letter in the same phrase or in the same sequence it is given to you in the question. Next is maintain appropriate tone. Again, I'm repeating this point. The reason behind this is formal letter में आप informal words नहीं use कर सकते. If you will be doing so, you will definitely be losing your bounds, right? Next is a good closing and signing off the letter. A good closing statement would be a win-win situation for you. And next is please keep the tone appropriate to the content. जो क्वेश्चन का कंटेंट है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, प्लीज आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड, आपके टोन के लेटर सेम चीज को एड्रेस करें. ऑब्वियसली यू वुड बी गोइंग टू हेल्प. So now the task two for academic and GT candidates. I have two options in front of me. First option is do advantages overweigh कि ये outnumber the disadvantages or the vice versa. And second is to what extent you agree or disagree. If you are attempting essay of the IELTS for task 2, I will be giving you just three major points that you need to focus. First point is your word limit. You have to have convey your ideas in the word limit from 250 to 280. अगर आप beyond 280 जाएंगे, you are just wasting your paper, you are just wasting your band. Trust me. More than 280 will not be fetching with an extra band. Next is thesis statement of your essay. आपकी एस्से की थीसिस स्टेटमेंट एक मेजर रोल प्ले करती है और गेम चेंजर होती है वो आपकी एस्से की स्कोरिंग. तो आपको जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आपको क्लियरली कन्वे करना होता है बाय द थीसिस स्टेटमेंट. एंड थर्ड पॉइंट इज एग्जांपल्स. एग्जांपल्स आर रिक्वायर्ड. एंड अगर आप एग्जांपल्स अपने एस्से में स्टेट कर रहे हैं, प्लीज डायरेक्टली लिंक करिए उसका प्रीवियस एंड उसके नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ. बट आई हैव विटनेस्ड दिस. बच्चे एग्जांपल बस लिख देते हैं, उसका कोई लिंक नहीं होता उसके स्टेटमेंट्स के साथ, एग्जांपल्स के पहले या बाद में आ रही है. इट इज अ रॉन्ग थिंग. ट्रस्ट मी, ये बहुत रॉन्गली फेस कर रहे हैं आप स्टेट एग्जांपल्स. एग्जांपल्स अगर आप दे रहे हैं, प्लीज क्लियरली लिंक करिए विद द स्टेटमेंट्स. So let's start with the reading for the DT candidates first. DT candidates, first two passages would be easy as compared to the third one that would be a bit tricky. So first passage you will be having, as we all know, true, false or not given. And second question type, which paragraph contains the following information.
So the first two subdivisions of the passage one, both are going to be easy. You can relax a bit. For the passage two, you would be having fill in the blanks and summary information questions. Again, it would be going to be easy one. So in collective, the first four sections of the reading for DT candidates will be easy. I would suggest try to wrap all these four parts in just 25 minutes because the third passage is going to be a tricky one. So let's start with the question types. First question type, list of heading, chances are less. I would say chances are very less, but again you need to practice for that also. Second question type would be a multiple choice questions. This is going to be tricky. And the next question type, summarizing the blanks, summary and the blanks. And the last question type is authors matching. Means you would be having two boxes in front of you. One would be having names of the authors, and second would be having discoveries done by the authors. You need to match discoveries to the author's name. GT candidate, good news for you. As in passage 3, there will be no heading. Yes, you can write passage 3 without list of heading. But again, we have one more question that it would be a bit tricky, and it's tricky, is authors match. Authors matching means in one box you would be having names of the authors, and in second box you would be having discoveries made by them. So you need to mismatch both of them. And second is MCQs, multiple choice questions, as we all know. And third is summarizing the blank. तो all you need to focus is on the word limit. सेक्शन सी की वर्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ा लेंथी पैसेज होगा आपका. अगर आप ट्राई करके 35 मिनट कंप्लीट डेडिकेट करने पड़ेंगे आपको तो पैसेज थ्री. So I repeat, be a bit smart when you're dealing with the question type of the authors matching. तो जनरली इजी होते हैं, हम थोड़ा मिसकंसेप्शन में पड़ जाते हैं कि एलिमिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. All you need to do is just focus on the question type, very clear. So now I'm predicting the academics reading. So let's start. Passage 1 would be easy. Question types expected are true, false, and not given in sentence completion, that is basically a fill in the blanks with one and two words. Academic चीज याद रखिएगा. If questions का demand है true, false means true, false only, yes, no में आंसर नहीं करेंगे. Generally जितने लोग तक में mistakes करते हैं, don't do such silly mistakes, right? And passage 2 has list of headings. एकेडमिक थोड़ी सी फंबल करती है when it compares to list of headings, बट अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं. The second question type is which paragraph contains the writer's opinion. Easy होंगे first two passages, I'm very much sure, but question type थोड़ी सी tricky है, so you need to be a bit smart. Passage 3 we have four options with us. First is multiple choice questions. थोड़े से tricky हो सकते हैं. Passage 3 थोड़ा lengthy भी होगा आपका passage 3 as compared to the previous two passages. Next is yes, no, not given. Then we have summary completion and researcher's name matching information. Researcher name means we would be having two boxes. One box would be having the researcher's name, the second box would be having researcher's discovery. आपको बस आपस में इसको ज्वाइन करना है. I repeat, first two passages आपके easy होंगे, lengthy भी नहीं होंगे इतने ज़्यादा compared to the three. Three lengthy होगा, third type extra demanding होगा, so we need to plan smartly. As we all know, listening is the module in which we have to answer 40 questions in 30 minutes tenure. The first section would be easy. A good news for you, section 1 would be the easy section in which there would be telephonic conversation between two persons, then you have to answer 10 questions. Word limit for the questions would be 1 and or a number. It will be easy one. So moving on, section 2. In section 2, chances of having a map are 50-50. Map could be or could not be there. If you are going to have a map, I request please focus on the directions. अगर आप directions miss कर देंगे, map के सारे questions आपके mismatch हो जाएंगे. So second question type that is expected and would be in the exam is your favorite question type, MCQs, multiple choice question. अगर आप MCQs में problem आ रही है, so please practice it a lot because MCQs are going to be in the listing for the 7 examination. एंड थर्ड क्वेश्चन टाइप विल बी मैसेज इन टेंसेस, जहाँ पे आपके सामने दो बॉक्सेस होंगे एंड आपने इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने उनको मैच करना है. थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है सेक्शन थ्री. In section 3, there are two major question types. First major question type is MCQs, then second major question type, massive information. In this section 3, MCQs might be having
more than two options as the correct answer. I repeat, सेक्शन 3 के एमसीक्यूज में अब आपके जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो एक सिंगल एमसीक्यू नहीं होगा, मोर देन टू भी हो सकते हैं। तो ऐसा ट्रिकी होएगा, प्लस आपके सेक्शन 3 विच ऑडियो की स्पीड होती है वो एज कम्पेयर टू द फर्स्ट से थोड़ी सी फास्ट होगी। सो यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली। And section 4 would be easy, again telephonic conversation, or could be a lecture, but speed थोड़ी सी fast होगी as compared to previous three sections. And word type as per us would be a one word or a two word. So all the best to the academic and GT candidates. I hope I was helpful. And for more such updates, please stay tuned to Dolphin and others. I will see you next time. All the best.